So your brain function, your entire bodily function is always on. Your brain doesn't have time to sleep, in fact. So that affects your attitude. So said you're moving your entire arm, your entire body. So तो अभी जो तुम्हें मजा आ रहा है ना इस पेंटिंग में, forget about the message. You don't know what you're making because you're not making anything. तो अभी जब हम AI को देखते हैं, I think right now the world is in the phase of fascination. Fascination में होता है you try everything. You try every possible scenario. जब मैं शुरू में edit में आया and I loved editing. Like यार मजे का जादू हाथ में आ गया, और after 99 we were introduced with non-linear editing, which was amazing. It's like you can do anything. Color change कर दो, filters लगा दो. Assalamu alaikum everyone. I welcome you to another episode of Tangent, the podcast series where we're trying to understand how design is being applied in Pakistan and is being used in different domains. Today we have a unique guest. I would not tell you more about his practice. We would try to explore today, by having a conversation with him. But he is from media and he is from, filmmaking industry. अस्सलाम वालेकुम अरमगन खान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आज हमने अपना सेटअप चेंज किया है। हाँ, आई वाज हियरिंग, सब सुन रहे थे और सब खुश हैं हमारे नए सेटअप से, आई गेस, बिकॉज़ आई थिंक इट्स everybody seemed relaxed and you seemed relaxed. आई एम रियली हैप्पी एंड रिलैक्स्ड बिकॉज़ थोड़ी ज़्यादा वो स्पेस है मेरे पास मूव करने के लिए। अरमगन खान, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपनी प्रैक्टिस के बारे में बताएं। Okay, I have a very mixed plate kind of experience, and mixed plate probably a little bit big also. I've had very different kind of experiences. I started as I was from NCA when I was studying. I was also working outside advertising agencies में कुछ वो कर रहा था, internships की साथ साथ। इमरान बाबर एक होते थे director who became my mentor later on. I started assisting him. रफ़ी पीर वालों के साथ script writing और ये चीज़ें कर रहा था, acting भी कर रहा था, तो a lot was going on. So after that, I went into advertising for some time, and back in 99, 2000. Then I went into drama industry. I started doing some television dramas with some of my new friends, जो उसवत बन गए. From there, I went into उनके साथ, that was Tony Barber, fashion world would know his name. And Tony के साथ फिर went into fashion industry में भी कुछ साल एक काम किया, उधर घुस गया. Then I went into documentaries with Imran Babar for a pretty long time. Started as an editor, went into camera work, eventually लिखता शुरू से था तो कुछ ना कुछ लिखता रहता था साथ. That experience basically shaped my entire life, I would say. Afterwards 10-12 years with Imran, a lot of documentaries, or not the kind of documentaries you will see mostly in Pakistan जो ज़्यादा information based होती हैं. We were mostly into cultural work. Did a lot of work for Armughan Hassan Foundation, did a lot of work, बड़ा journalism type के काम भी किए. The biggest documentary I would say was Without Shepherds. It's one of the American productions we shot for 3 years in Pakistan, 2007 to 2010. It's an award-winning documentary, probably the only one so extensive in Pakistan. That changed my entire perspective probably on my own country. उसमें मैं as DP भी था, थोड़ा बहुत edit का काम भी किया था. So after that 12 years shaped a lot of my fiction style later on. I always wanted to be a fiction writer and a director. That was my shuru se maqsad yahi tha. So, and that's where I found later on, which Imran Babar used to say, is that fiction, life is more fictitious than fiction. And very true. And I think my sense of fiction now comes with all that experience that I've seen of real life. Okay. And so that influenced a lot of my writing, a lot of my work later on. In 2015, I came back to advertising when I joined iDcreations, Zahiruddin. And they're very narrative-based company in advertising, which was very rare. Still is rare. So, and iDcreations changed a lot of structural things in advertising in Pakistan, I think, because Zahir wrote a lot of narrative-based commercials. तो आज जो आप बहुत बड़ा चेंज देखते हैं इंडस्ट्री में, कोई narrative बनाने की कोशिश कर रहा है, that probably started with iDcreations and Zahir. So I went with Zahir, उसके साथ करता रहा. So उसके बाद now we are also moving towards proper narrative. I did my first short film in 2021, written and directed by Daughter by Law. It's on YouTube. And
Zahir has just done his first feature. I'm writing some more features now, so coming towards narrative side. But my past experience is more than just writer and director. It's a lot of skill based, but I think documentary is very different. I did a musical travelogue back in 2007-8 for ARG TV. It was called Salam Balkan. It was a musical travelogue in Bosnia and Croatia, Eastern Europe. So I used a line by Marco Polo in the beginning, which said, "I haven't told half of what I saw." And I loved it because this is how it is when I'm sitting in front of you. Even if I'll have hours to speak about my experiences, I won't be able to tell probably not even half of what I've seen. And this is true with everyone. You just can't tell everything. More than half of your actual life is abstract. And you can't explain abstract into words, and that is why abstract paintings के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता या समझ नहीं आती लोगों को, because you just can't. That is why it's abstract. Yeah, the minds cannot cover it. This is how life is also. Okay. So really nice, and I was amazed, when you were talking about your journey. आप ये कहते हैं कि मैंने 5 साल ये काम किया, 6 साल ये काम किया, 12 साल मैंने ये काम किया. So I was really amazed and like fascinated के एक इंसान की लाइफ के अंदर कितने मज़े के पॉइंट्स आ सकते हैं करियर जर्नी के अंदर, बिकॉज yes, you were able to engage people like Babar Saab and other people, or Tony for that matter, but then you were also shifting gears, shifting characters, shifting a lot your own focus. So how did that process was for you in past 25 years कि आप जब चीज़ें चेंज कर रहे हैं, आपने DOP भी काम किया, आपने एडिटर काम किया, आपने एडवर्टाइजिंग में काम किया, so वो जो रोल चेंजिंग है या gear changing है, how did you manage that? I think it sounds more difficult than it is. Reason being is ये तो सारी surface की चीज़ें जो सामने बदल रही हैं. The core thing is always the person behind it. At the same time, we are so many things that we don't realize. For example, I'm sitting here as a filmmaker right now. I'm a writer, I'm a director, I'm an editor, I'm a cinematographer. I used to be a photographer. I'm also a father. I'm also a husband. So ये सारी चीज़ें हम एक टाइम पे कर रहे होते हैं. We are designed to do multiple things. And when we isolate things from ourselves, then it's difficult to change gears. But I think when you are mostly aware of you as a person, so those changes come naturally. At times you just know you're in there, and now it's like abhi aap yahan se uthenge aur aap kahin aur chale jayenge. It'll be very natural for you. So this is how it should be in work also. It's like it just comes from your personal being, where you stand. So sometimes you're doing multiple things, sometimes you're just doing one thing, sometimes you don't want to do anything. You just want to be there, just exist, not doing anything. So it's not about doing, it's not about fields, it's really about who you are at the end. A bit of abstract concept, difficult to explain, but I think it's pretty easy when you approach it from that side. Okay, ठीक. एक तो मैं आपसे ना स्टोरी टेलिंग और क्या कहते हैं राइटिंग अ स्क्रिप्ट, उसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि हाउ यू स्टार्टेड डूइंग इट, एंड वेयर डू यू सी दिस इंडस्ट्री मूविंग फॉरवर्ड. जिस अगर अगेन हमने थोड़ी सी नए टूल्स की बात की थी, क्या वो कुछ चेंज करेंगे या देयर आर अदर एस्पेक्ट्स विच आर इनहेरेंट टू ह्यूमन कैपेबिलिटीज? कैन यू टेल अस अ बिट अबाउट my own writing? I started writing when I was 7. I started printing my work when I was 12. It took me 5 years. उससे पहले नाकाबिले शात होती रही कहानियाँ. उस ज़माने में इंटरनेट नहीं था, जो आजकल तो है ना, जो लिखा बस आ गया भाई सामने. Back at that in the 80s, it was you really have to write something. कोई ना कोई बैठा होता था, which was a good thing. इस लोग आपको एक लेवल तक पहुंचना होता था जब आप इस काबिल होते थे कि आपके अल्फाज दूसरों के कानों तक पहुंच सकें. And that is why noise कम थी और कोई solid बात ज़्यादा थी. It took me a long time there. But afterwards, as a writer, every writer has a different process because it's a very organic process. So basically, storytelling is somewhat an art of communication. Is like आपको एक आदमी एक जोक सुनाता है, आपको हंसी नहीं आती, वही जोक एक और आदमी सुनाता है और आप हंस के ज़मीन पे गिर जाते हैं, लेट जाते हैं. It's like it wasn't the joke, it was the person who was telling it. It's like so storytelling is
even in something which is very, you know, what is drama when you talk about writing is not necessarily something जिसमें जब तक कोई aliens नहीं उतर रहे, कोई बहुत action नहीं आ रहा, it's engagement never comes from that. Engagement always comes from जब लोग relate करते हैं आपकी कहानी से, तो how you gonna do that, you know, how you gonna tell the story. So more than, it's not half your story, half the people who gonna listen to the story, so you got to understand them also. Is like कैसे सुनानी है. मैं अपने पाकिस्तानी लोग बैठे होंगे तो मैं एक जोक या कहानी और तरह से सुनाऊंगा. सही. अगर एक जगह पे कोई फ्रेंच ऑडियंस बैठी हुई है या कोई अमेरिकन ऑडियंस बैठी हुई है तो मैं वही कहानी किसी और तरह से सुनाऊंगा, बिकॉज आई गॉट टू नो हु आई टॉकिंग टू, यू नो, एंड दैट इज वेयर योर कम्युनिकेशन, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्टोरी टेलिंग, आई थिंक स्टोरीज तो शायद सबके पास होती हैं. स्टोरीज को ढूंढना मुश्किल काम नहीं है. माई लाइफ इज अ स्टोरी, योर लाइफ इज अ स्टोरी. एवरी पर्सन आई जस्ट मेट राइट देयर, सीढ़ियों से ऊपर आते हुए जिस चौकीदार ने दरवाजा खोला था, एवरीबडी इज लाइक ए फिल्म, यू नो. सो इट्स हाउ यू गोना टेल द स्टोरी. दैट इज स्टोरी टेलिंग. द आर्ट इज अबाउट कहाँ से सुनने वाले को क्या बताना है, कितना बताना है, कहाँ रुकना है, कहाँ तेजी से निकल जाना है. यू नो, दैट इज द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. दैट इज व्हाट स्टोरी इज. एंड वह जो मैं अभी हम बात कर रहे थे इसकी, आपने दूसरा पूछा कि पाकिस्तान में जो हो रहा है, आई थिंक वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद पाकिस्तान इज वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ राइटर्स सिस्टमैटिकली. जिस तरह बेचारे ख़त्म किए गए 80s से, हम लोगों ने ख़ास तौर पे मेहनत करके ख़त्म किए इस मुल्क में. तो उसके बाद अब जो न्यूअर जनरेशन है, देर वेरी मच, अभी हम बाहर जेनजी के बारे में बात कर रहे थे बिफोर दैट इंटरव्यू. So I understand that's a fascinating generation, and they're not only very eager, they want to change. वो बहुत सी चीज़ों से तंग भी आए हुए हैं. There is rebellion in them, which is natural also, but they've all the right reasons for that also. But अभी रास्ता नहीं मिल पा रहा ना, क्योंकि एक तो ये कि लिटरेचर आपको पास जो मिलेगा स्पेशली अपनी ज़बान में, वो 80s 90s या 60s 70s का अब तक आपको अवेलेबल है जो अच्छा है. उसके बाद क्योंकि लिखा नहीं गया, सो देयर इज़ नॉट मच फॉर देम टू, यू नो, ट्राई टू फाइंड इट. व्हाट आई सी द डिफरेंस अब कराची में, इवन लाहौर में, द न्यू फिल्म मेकर्स दैट आर कमिंग इन, दे आर रियली eager, they're really great. बहुत से लोग बाहर से पढ़ के आए हैं, you know, and they're really educated filmmakers. They really have a good sense of, you know, आपका equipment, production quality, lighting, you know, नए DPs आ रहे हैं. It's all good. What I see lacking is also in the writers, but also in the filmmakers is कि अब वो जो उसके बाद एक gap आ गया आपके और आपके roots में. So what I see is there was a movie जो कुछ ये जो नए फिल्म मेकर्स उन्होंने मुझे एक दफ़ा भेजी थी क्रिटिसाइज करने के लिए, to help them जब वो लिख रहे थे. I'm not going to name the movies, but it's a good one. So there was that पुलिस वाले का एक रोल था उसके अंदर, and you know, उसके अंदर वो एक DSP था और साथ वो उसका एक सीन था जिसमें वो अपने कांस्टेबल के साथ बैठ के दे हैविंग ए ड्रिंक इन द कार. सो मैंने जो उनको काफ़ी लंबा फीडबैक भेजा, मेरा अपना अब्बा पुलिस में था, यू नो, माय फादर वाज इन SSP सिटी व्हेन ही रिटायर्ड. सो मैंने से कहा यार ये कॉप है अभी तक, यू नो, तुम पाकिस्तान की कहानी लिख रहे हो, तुम्हारे उसके अंदर ये गली स्ट्रीट के गैंगस्टर्स हैं, बॉयज़ हैं, और ये पाकिस्तानी पुलिस वाले हैं. सो मैं तुम्हें अभी ये बता देता हूँ, एक पाकिस्तानी DSP अपने कांस्टेबल के साथ बैठ के ड्रिंक नहीं करेगा, चाहे वो करप्ट हो, चाहे वो कुछ हो, यू नो, ही विल नेवर डू दैट. यू नो, वो उसका ऑरा क्या होगा उसके लिए, तुम्हें खुद कभी तुम्हें पुलिस वालों ने पकड़ा है, कभी तुम हवालात गए हो, यू नो, कभी वैसे ही गए हो, नो. I've been a son of a SSP, but there was a time when I spent a night probably in a cell. मोटरसाइकिल पे कुछ बैठे हुए थे दोस्तों के साथ, पेपर्स नहीं थे, समथिंग लाइक दैट. रात गुजरी हुई है जेल में, आपने देखा हुआ है, यू नो. तो वो कनेक्टेड नहीं है अपनी रूट से अभी. दे वॉन्ट टू, दे डोंट नो हाउ टू, यू नो. सो आपकी राइटिंग में ये चीज़ें सामने आती हैं फिर, बिकॉज द काइंड ऑफ कैरेक्टर यू विल क्रिएट इज हाफ योर एक्सपीरियंस. जब आप अगर बाहर वेस्ट वगैरह में पढ़े हुए, द मूवीज वी वॉच, द नॉवेल्स वी रीड, मोस्टली सब इंग्लिश हैं, तो हम कहानी, बात करने का स्टाइल, वो सब सीख जाते हैं, लेकिन हम अपनी रूट्स को पकड़ ही नहीं पाते हैं. सो वो एक्सपोजर आते आते ज़रा टाइम लगेगा, यू नो. अभी तक चीज़ें फिक्शन बेस्ड ज़्यादा हैं. ये वही बात है जो मैं डॉक्यूमेंट्री से बात कर रहा हूँ ना, कि बिकॉज आई ट्रेवल्ड दिस कंट्री सो मच बिकॉज ऑफ दोज फ्यू प्रोजेक्ट्स इन द डॉक्यूमेंट्रीज दैट गिव मी रियल सेंस ऑफ कि मैं खुद कितना एलियनेटेड हूँ अपने मुल्क से. अब मैंने दुनिया फिर ली है
और जब मैंने वो प्रोजेक्ट्स किए तो मुझे समझ आई अपनी दुनिया तो देखी ही नहीं है, यू नो, अपने लोगों का तो पता है कि क्या पता है, ये जो अंदरून शहर में वो लगाते हैं कतलम में उनको जानता होगा, बट व्हेन यू गो इन द कंट्री, व्हेन यू गो इनटू द कंट्री साइड, डीप इनटू रूरल एरियाज, और आपको बहुत मुख्तलिफ लोग और कल्चर्स मिलते हैं, वी हैव नेवर सीन देम, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स 80% ऑफ पाकिस्तान, यू नो. सो आई थिंक दैट इज़ वेयर प्रॉबली वर्क वुड बी नीडेड, बिकॉज ये खुद से नहीं होती चीज़ें, बट आई होप इट हैपन्स, बिकॉज आपकी नई जनरेशन में कैपेबिलिटी बहुत है, विलिंगनेस भी बहुत है. अभी रास्ता नहीं दिख रहा, कुछ धुंध ज़्यादा है. शायद वो प्रैक्टिस के साथ साथ, जैसे आपने कहा कि वो वक्त, आपने कहा वक्त के साथ आएगी और वो शायद लगे रहेंगे तो आ जाएगी. अच्छा, बाय द वे, आई एम रियली हैप्पी दैट यू नो आई हैव अ स्पेशलिस्ट लाइक यू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, देन आई कैन आस्क अ पर्सनल प्रॉब्लम दैट आई फील इन एवरी हाउस होल्ड. लोग उससे रिलेट कर सकते होंगे. बहुत ज़्यादा कंटेंट अब प्रोड्यूस होता है. It's very easy to pick up a mobile or a camera now and be anyone that you want to be or do whatever you want. चाहे वो टिकटॉक की बात है, इंस्टा एंड इवन यूट्यूब वगैरह. So recently I've been seeing my nephews and nieces, they're watching those जो भी content होता है यूट्यूब के ऊपर या शॉर्ट्स वगैरह. तो I have this sort of inner uneasiness कि ये किस किस्म की चीज़, मतलब ऑफ कोर्स वो पेरेंटल गाइडेंस के अंदर ही है, लेकिन वो जो आपने वो बात की ना स्टोरीज़ की, अच्छा हर एक डिफरेंट तरीके से बताता है स्टोरी को लिखना कैसे है, या वो डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स हैं, और वहाँ पे भी कंटेंट है, उसमें भी कुछ ना कोई एंगेजमेंट तो है, कोई ना कोई स्टोरी है. टिकटॉक पे हर किस्म का इन लोग आके चीज़ें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. प्लीज़ टेल मी एज अ फिल्म मेकर, एज एन एक्सपर्ट हु अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस कि वो क्या है. टेक्निकल तो है ही है, बट क्या कोई उस कंटेंट में, उस मैसेज में, उस मूवी में, उस शॉर्ट में क्या डीपर मीनिंग या कोई लाइफ की और प्रोफाउंड चीज़ों का होना ज़रूरी है कि नहीं है, या सिर्फ वो एक चंक है एंटरटेनमेंट का, 15 सेकंड का, 20 सेकंड का, जिसको आपने माइंडलेस की देखा, यू मूव ऑन टू नेक्स्ट. क्या होना चाहिए ऐसे कि नहीं होना चाहिए? गुड क्वेश्चन. होना चाहिए पे is there are few things which we can't control whether they should be there or should not be there. They're part of a larger evolutionary process that goes on. जैसे अभी मैं बात कर रहा था fascination की, so this entire time right now that we're going through, the world is going through, is an immense fascination, because the tools that we have invented now are so vast that right now we just can't put our grasp till the end of it. We just can't. It's infinite so far. So a lot of it is already happening. A lot of it will keep happening. I think what we should do, or what we can do, for example, when you talk about our children or we talk about someone who you care about, is because first I would like to say too much information is noise. Imagine what is the difference between intelligence or wisdom or information is like different dots on a canvas, a lot of dots. You keep increasing the dots, it will become the noise, right? What is wisdom is connecting those dots. That is what wisdom does to knowledge. Without wisdom, knowledge is noise, and too much noise, you'll get lost, so what you can do is, because that wisdom comes with time, but it is always, इस चीज की मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि who's the beneficiary or who's not the beneficiary. It comes on the being who the observer is. So if your child is an observer, you need to work on him or work with him or her. It's like to make them a better observer. So they will connect their dots by themselves, because you can't do that for them. You can never do that. But you can help them to be able to understand like how they can connect, so they will make their own connections. Okay. So that is what you can do, and it will keep coming. Abhi to ye noise aur badhegi, because there's too much. And if you don't do that with anyone jo bahut chota, abhi the minds which are younger gets more fascinated, because हमसे भी हम fascinate हो जाते हैं यार उससे. तो बच्चे को आप क्या कह सकते हैं, is like, तो उसको आप control नहीं कर सकते. But again, if you won't help that child, then he might probably become one of the dots in that noise for someone else, to connect with something. But if you want them to lead, if you want them to be the people who can make those connections, it's like आप किसी भी चीज में जब जाते हो ना, सारी noise जब सारी आती है, story telling हो या life हो, more important than what to do is to understand what not to do.
more than going forward, आपको बहुत तेज चलना या भागना आने से ज़्यादा ज़रूरी है रुकना आना चाहिए. कब रुकते हैं? 100 माइल्स पर आवर पे तो निकल गए भाई आप, रुकना आता है आपको? अगर रुकना नहीं आता तो पेस कुछ नहीं करेगी. द सेम पेस विल किल यू. It won't take you anywhere. It'll be your demise if you don't know when to stop, how to stop, कितना रुकना है, कहाँ जाना है. तो रोकना जरूरी है, वो सिखा दें अगलों को या उसमें हेल्प कर दें सीखने में. सो दैट माइट हेल्प द प्रोसेस. बाकी तो चलता है, वो चलता रहेगा. A lot of it is gonna happen more and more. अभी तो इन्फॉर्मेशन और बढ़नी है, नॉइज में भी जगह है, अभी बहुत डॉट्स और आने हैं. यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हम उनको इस चीज़ को नेविगेट करना सिखाएं, इन चीज़ों को help them that इस्तेमाल करना help them सिखाएं. how to connect them together, help them how to connect them, that you can find a path between that chaos, that you can find a symphony in that chaos, but symphony is always there, but it will always come. जब तक आप connect नहीं करेंगे वो मिलेगी नहीं. It's gonna be just गाड़ियों के हॉर्न से आप म्यूजिक भी बना सकते हैं, but otherwise आपके कान बर्बाद हो जाएंगे अगर आप नहीं बना पाएंगे. And if I try to connect a dot, so our role would be of Anwar Saeed in their life. Correct. And I think everybody should be an Anwar Saeed at some time. Is like जब आपके पास जितनी knowledge है या जितनी wisdom है, it's better to share with anyone who's willing to listen. But because Anwar Saeed is one thing which is very important, what we are missing right now in this conversation is there was someone who was willing to listen, who went to Anwar Saeed. It's like Anwar Saeed couldn't just go to every student and said, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, ये करना है, because you also need, what is a teacher and a student? There was a great mind, I think he died last year, Sir Ken Robinson, a very great educationist, I think very revolutionary educationist. So one of his talks on TED, I think he talked about breaking down education to the basic levels. It's like कि अगर हमें मसला हल करना है तो हमें basic levels पे जाना है. So he said, keep taking out the unnecessary things so you can reach the basic. It's like अच्छा स्कूल है, क्या ज़रूरी है बिल्डिंग हो? ज़रूरी तो नहीं है, बिल्डिंग निकाल दीजिए. क्या ज़रूरी है कि यूनिफॉर्म हो? ज़रूरी तो नहीं है, निकाल दो. So you keep getting things out, and at the end he reaches what is education is one person who's willing to teach and one person who's willing to learn. That is education. Wow. So now we'll start from there. Wow. So just like that, when you talk about this, sari noise or cheese, so it's not only Anwar Saeed that you need, you also need the person who's willing to listen to Anwar Saeed. Who wants to go to so Anwar it takes two basically to go forward together. No. That's amazing, by the way. I think जो आपने उनका Ken का बताया जिस तरीके से, Sir Ken Robinson. I would look him up. मैं उनके बारे में और पढ़ूंगा. Yeah, he had some books also, The Elements. Read him up. He was an amazing educationist. I think the world lost him a little too early. He was I was following him like from 2008 when I saw his first TED talk. Amazing guy. ठीक है. Okay. अच्छा. So थोड़ा सा हम off topic, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि how a 90s kid is doing these days. Because you guys were the ones जिन्होंने हमें हमारा pop music दिया. You guys are the ones जिन्होंने हमें in general भी हमारा popular culture जो है it's coming from 90s. Yeah. 80s में भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी. हसन जहांगीर के में, नाजिया जुहेब के में. Yeah, that's all it is. I'm an 80s kid. I'm a 90s youth. अच्छा. But I was an 80s kid. I was born in 75. So my 80s was my time when I was in my teenage. 90s when I went to, अपनी school वगैरह खत्म हुआ, college life शुरू हुई. That was the 90s. And so how's life for an 80s kid? Very strange, and I think that that adds up to whatever little piece of wisdom I've learned in my life, because we have seen so much. We are that generation who has seen a time जब हम college में थे, even NCA में, so there was no internet, there was no cell phones, कार्ड फोन्स थे, तो हमने वो टाइम भी एक्सपीरियंस किए. फिर कंप्यूटर्स आना शुरू हुए, प्रॉपर हर एक के पास आ गए, वो भी एक्सपीरियंस किया. एंड देन ए फुल फ्लेज डिजिटल एज केम, उसमें भी हम काम कर रहे थे. सो हमारी जनरेशन मिक्स भी है, क्योंकि बहुत से लोग जो इस तरफ नहीं आए, किसी ऐसे काम में चले गए जिसमें इन्वॉल्व नहीं थी आपकी टेक वर्ल्ड जो बाद में आई है. सो दे आई सी लुक एट देम एंड इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम टू कोप अप विद द मॉडर्न टेक्निक्स एंड मॉडर्न गैजेट्स विच आर नीडेड. वी रिमेन समहाउ इन द फील्ड्स जिसमें कंप्यूटर्स और ये चीज़ें आती गई, तो विद टाइम वी वर ऑल्सो अडेप्टिंग. बट एक चीज़ ज़रूर है, आई डोंट नो अबाउट माई जनरेशन, बट मी एज जनरल आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ वेरी टेक सेवी पर्सन. 90s से कंप्यूटर्स पे लग गए और फिर आज तक हर चीज़ एक्सप्लोर कर ली.
for last 4-5 years, there's so much happening. The space has gone such इतनी speed पकड़ ली उसने. Even I find myself, it is hard to catch now because every 3 months जब ये बात हम AI वाली चीज़ों पे आते हैं, you know, space में ये हो रहा है, AI में ये हो रहा है, फलाने में ये हो रहा है, startups चल रहे हैं, इंटरनेट कहाँ पे पहुँच गया है. So like it is difficult even for me to grasp the pace anymore. So like sometimes I need to वही कि यार अब बैठ के अलग से ना अपने आप को अपडेट करना पड़ता है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, कौन कौन सी नई चीज़ें आ गई हैं. एंड द मोमेंट आप 3 महीने बाद खोलूंगा 4 नए टूल्स आए हुए होते हैं, you know. And I am now trying to being all that wise and whatever अपनी इस एजुकेशन और हिस्ट्री के साथ I'm struggling with a lot of that new technology coming in. I have a lot of ideas, but there's so much that even आपको इतनी समझ आ जाने के बाद भी ये समझ नहीं आ पा रही होती कि इसको टैकल कैसे करना है, you know. That's an interesting generation because we have seen a lot, yes, from slow days to that F1 fastest lane life. So we've seen a lot. No, definitely. No, thank you so much for saying this. You know, वो जर्नी कैसे भी है बदल, sharing that relatable aspect जिसके हम सब किसी ना किसी हद तक रिलेट कर सकते हैं. We all struggle again with change, या keeping up with technology or advancements of our age. But can I share something with you about not judging your generation? Sure. But I think Generation X is very sort of anchored. It is. Because yes, change is happening, but I think again, I cannot say about other countries, but here at least in Pakistan, this is the generation who has seen the old days as well, but they're very as parents as well, they're very updated with their times. उनको थोड़ा बहुत पता है कि बच्चे क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, क्या उनकी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट वो जो वैल्यूज़ है ना, कल्चरल वैल्यूज़ के हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ सेंस के अच्छा चीज़ें ठीक है, ओपन माइंडसेट रखना है, अडॉप्ट करना है, बट कहीं कहीं ये भी बताना है कि वैल्यूज़ क्या हैं, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड हाउ थिंग्स शुड बी, बिकॉज हर चीज़ तो फ्लूइड नहीं हो सकती ना. करेक्ट. ठीक है. सो आई थिंक मे बी माई जनरेशन मिलेनियल्स दे स्ट्रगल विद दैट सॉर्ट ऑफ डिफाइंड कहीं कहीं पे जो चीज़ें होती हैं, बट देन ऑल्सो द नेक्स्ट जनरेशन कमिंग इन दे माइट हैव other sort of challenges in that regard, but your guys, you're very anchored, I feel. You can say that because हमारा जो बचपन का वो time है which forms your entire personality for the rest of your life was mostly in the times when there was less noise, at least, so we became anchored because we had time with everything, जो habitual में बात कर रहा था. So when you had time to create a lot of habits, then they stay with you, and at least you have experienced it for such a long time that even in your mind and your memories it's there. So no amount of new information can erase that. It's there. So and I agree कि ये सब चीज़ें ज़रूरी भी हैं. This is nice. What I don't like a lot about my generation is like not all of them, but most of them. I think because socially Pakistan को जब हम देखते हैं, it changed a lot. This is one aspect of life जब हमने ये art और tech की बातें की. The other was what happening in Pakistan, that was what we will call the post Cold War era. Or during the Cold War era. So जब मैं बात कर रहा था ये जो writers के ख़त्म होने की सारी चीज़, that also was happening at the same time. Religion became so different. If you go to the Pakistan in 60s and 70s and then compare the Pakistan which was in a transition state during the 80s, started from the 70s, started impacting lives of people in the 80s, and then we saw the results in later 90s and in the early 2000s, जब आपके millennials की generation बड़ी हो रही थी. So we had a very liberal kind of upbringing at that time, but by the time हम लोग parents बने, so very few people remained that way. Most of them became so confused about our own identity, जिसमें आपकी आज तक तो हम उस आइडेंटिटी से ही नहीं निकल पाते कि क्या हम अरब हैं या हम इंडियंस हैं. हमारे लिए मज़हब और ट्रेडिशन और कल्चर इतना मिक्स हो गया है that people cannot
take it separately. That is also one way, because हमारे लिए change को लेना और भी मुश्किल है, because we are mostly a part of our whole generation, and I'm not talking about certain institutes, I'm talking about general population. Because of all that time and experience, half of us is now more right. Just if not right, we think right are the good people. There's something bad being a person who's a liberal. There's being bad on someone with an open mind. So that is why आपके dramas में भी अगर कोई girl काम करती है तो वो जरा बुरी ही डिपिक्ट होती है. वो कभी हीरोइन नहीं होगी, वो घर में बैठी हुई सावतरन जो सबकी बात मानेगी और दुख सहेगी, उसको अल्लाह इनाम देगा और वो सुरखरू होगी. जो खड़ी होगी अपने काम के लिए, वो नॉर्मली नेगेटिव ही होगी. उसका या उसके साथ बुरी हो रही होगी इवेंचुअली किसी वजह से. सो दीज थिंग्स आई डोंट थिंक कि वो लोग को बैठ के साजिश कर रहे हैं जो लिख रहे हैं. इट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट टाइम, द वे द एंटायर नैरेटिव्स वर मेड, वेदर पॉलिटिकली, जियोग्राफिकली, जो भी उस वक्त पावर्स काम कर रही थी. तो उस नैरेटिव ने जिस तरह असर किया हमारे मुल्क के ऊपर, हमारी जनरेशन पे, एंड माई जनरेशन अगेन इज द मोस्ट अफेक्टेड बाय इट, जो डायरेक्ट इन्फेक्ट हुई, बिकॉज उन्होंने वो देखा और फिर उस सारे कन्फ्यूजन में गए. और अब जब आपके बच्चे आए तो द जनरेशन गैप बिटवीन अस एंड आवर children has gone to another level, because हमारे जो बच्चे हैं they're very different. I see what, for example, पाकिस्तानी टीम जैसा भी कर रही है भी वर्ल्ड कप वगैरह में जो भी है, the change if you see with the new boys in पाकिस्तानी टीम हमेशा आपस में divided रहती थी. there were a lot of politics and stuff between the players, not even between teams. पाकिस्तान इंडिया की टीम्स की आपस में भी बड़ी गालम गलोच भी हो रही है, ये भी हो रहा है. now you see those new boys जैसा भी वो perform कर रहे हैं, most of them encourage each other. Most of them are friends with each other. एक दूसरे को promote करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं. Even I've never seen Pakistan Indian teams sitting together so many times and having conversations and a laughter together, which seems very nice, which seems very good. तो ये अब हालांकि at the same time state level पे और एक और level पे एक और नफरत का आलम चल रहा है, but उस generation का आपको नजर आ रहा है, where does the generation stands. So I think it's a great generation. But I don't know how to give them all that. So for that I think these kind of platforms are very necessary, that raste nikalna shuru ho, that they can start looking up the right history. हमारी तो इस वक्त नई जनरेशन का दूसरा मसला ये कि उनकी तो बेचारों की हिस्ट्री 10 साल पहले से शुरू होती है यार. मतलब you talk about them, what was happening in Pakistan in 60s and 70s, and they have no clue. They don't know what the Cold War थी क्या, Cold War के implications क्या थे, and how it affected our entire generation, how it affected our arts, and how it infected the entire built-up and the evolution of arts in Pakistan. Because जिस तरह हम thrive कर रहे थे तो क्या हुआ, कहाँ गए, confusion कहाँ आई. आज आप एक artist या musician को देखते हो, सब लोग गाने सुनते हैं. हम वो कौम कब से बन गए जो हर वक्त गाने तो सुनती है बहुत शौक से, डांस भी देखती है, लेकिन उसको कहीं हराम भी समझती है. So at the same time you're trying to live on two boats. Like एक जगह खड़े हो जाओ यार, या हराम कर लो, मत सुनो. दिल भी कर रहा है लेकिन गलत भी है, तो वो हम कैसे बने. ये सारे जवाब जो हैं वो उस टाइम में हैं, and it is difficult to decipher that for now. But I think our generation have seen all that, and that is why we're probably the only generation जो शायद सबसे बेहतर बता सकती है या समझ सकती है इस चीज़ को, because we've gone through both. मेरे ज़हन में एक डील आ रही है. हम ऐसा करते हैं कि जनरेशन Z को और जनरेशन X को ना बीच में मिक्स करते हैं, बिकॉज वो आपको टेक में हेल्प कर सकते हैं. True that. ठीक है, and then you guys can give us some of your wisdom or your experience. Give me some space with them and I would love to do that. एक बार्टर हो जाएगा ना दोनों को. आप कहना कि वो हर 4-5 महीने बाद चीज़ें चेंज हो रही हैं. You employ generation Z के साथ हमें बताओ ये कैसे करना है, then you. Sounds like a very good barter. I will go for it anytime. ठीक है. आप जब ये बात कर रहे थे ना, वही जब आपने सारी अभी इसकी अपने एक्सपीरियंस की बात की, अपनी जनरेशन की बात की, एंड हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड आवर सोसाइटी एट लार्ज एंड नेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, एक चीज़ मैं ये सोच रहा था कि जैसे आपने मिसाल दी ना कि हमने अगर राइटर्स ख़त्म किए हैं या आज थोड़े से कम हो गए हैं. आपने पहले ये भी बात की थी कि कुछ लोग बाहर से भी पढ़ कर आ रहे हैं, कराची में भी कुछ काम हो रहा है, नए लोग लिख रहे हैं नए तरीके से. मेरे ज़हन में वही फिर एक और बात आई अरमुग़ान के, हसीना मोइन का काम या बजिया का काम आप अगर 80 में देखते हैं, तो जैसे मिसाल तौर पे अभी आपने वैसी मिसाल दी कि 80s 90s के बाद जो चीज़ें होना शुरू हुई, हम बहुत ज़्यादा राइट विंग हो गए या रेडिकलाइज हो गए. बट वो, और आपने फिर वही जो उस लड़की की बात की
कि जो जॉब करती है वो आज के ड्रामों में फ़र्क तरीके से है, बट आप हसीना मोइन का सारा काम 80s में देख लें, it was brilliant, yeah, very progressive girls. but and then maybe not just as a writer but as a social sort of contributor, she enabled a change. She did, yes. Same goes for Bajia maybe. Yeah. ठीक है, they taught us, these thinkers, these writers, कि it's how things could be. अगर वही एक collective एक सोसाइटी के लिए अगर उन्होंने कुछ इमेजिन करना था, कुछ आइडिएट करना था, कोई स्टोरी बनानी थी, बट देन बीइंग रेलेवेंट टू दैट टाइम एंड बीइंग रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम, बीइंग रेलेवेंट टू द सिचुएशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. It is, yeah, true that. शायद वो जो आप बात करें, मैं यही सोच रहा था कि शायद हसीना मोइन मिसिंग है इस वक्त, कि वो बताएं आके, या वो आके लिखें, या बजिया मिसिंग है, या मतलब अनवर मकसूद भी काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े, मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन आप और भी बता सकते हो. तो क्या फिर वही मेरे ज़हन में एक और बात भी आती है कि शायद हसीना मोइन भी वही रोल प्ले कर रही थी सोसाइटी के लिए जो अनवर सईद ने आपके लिए किया. I agree with you, but the more important question is ये लोग क्यों missing है? That is where the question is. Missing तो हैं, but क्यों missing है? What happened with the next generation? हमें नया अनवर मकसूद क्यों नहीं मिला? नई हसीना मोइन क्यों नहीं पैदा हुई? समवेयर मैं एक दफ़ा मेरा ख्याल FC कॉलेज में कोई लेक्चर था फिल्म का, उस पर उन्होंने बुलाया था, एंड आई मेट अमजद इस्लाम. अमजद वेरी सीनियर राइटर एंड डन वंडरफुल वर्क. अमजद साहब से बात ही हो रही थी. अमजद साहब वो कुछ ड्रामाज लिख रहे थे उन दोनों. ऐसे अमजद साहब क्या लिख रहे हैं? आजकल जो चल रहे हैं आपके ड्रामे, ये तो बहुत फारिग से किसी ड्रामे की बात हो रही थी. आई डोंट नो क्या था. एंड ही वाज टीचिंग इन BNU आई थिंक आल्सो. ही वाज या NC में भी पढ़ाते रहे हैं, और बात हो रही थी यार ये क्या हो रहा है आजकल, ये किस तरह के स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं ना. आप वो राइटर हैं जिनके बड़े बड़े ज़बरदस्त अफसाने हमने पढ़े हुए हैं. उन्होंने बड़ी अच्छी बात की. उन्होंने कहा यार मैं तुम्हें बताऊं, मैं टेलीविज़न का नाम नहीं लूँगा मैं, बट ही से मैं उधर जाता हूँ ड्रामास के लिए, तो मैंने ये वाले स्क्रिप्ट रखे सामने, एंड से वी डोंट वांट इट, क्योंकि ये नहीं चलेगा. अमजद साहब ये नहीं चलेगा, आपको ये लिखना होगा. दे मेड अमजद राइट अबाउट क्राइंग वुमेन. अमजद की कोई जागीर तो नहीं है ना कि वो उनके पास पैसे आते रहेंगे और वो बस अपने अफसाने लिखते रहें. ही ऑल्सो नीड्स एन एनवायरमेंट इन विच ऑल दैट ही वाज राइटिंग वो आगे फॉरवर्ड हो रहा हो और वो और चीज़ें लिख रहे हो. ही वाज इवन wasn't able to change. He had a great name even at that time. He couldn't do it. So एक नया राइटर क्या कर लेगा जाके, So it's not, again, वो जो पूरा प्रोसेस शुरू हुआ, और आपके 90s में जब कमर्शलाइजेशन भी आना शुरू हुई, एंड समहाउ हमारा जो मीडिया था और PTV का वो सारा टाइम था जिसमें हसीना मोइन जैसे लोग ड्रामे लिख रहे थे और शहजाद खलील जैसे लोग डायरेक्टर थे और बना रहे थे, काम कर रहे थे, एंड सडनली ये सारी चीज़ जो है वो स्टार के पीछे लग गई, और आपने वो सास भी कभी बहू थी जैसे ड्रामे बनाने शुरू कर दिए, और इवन बाद में इंडिया आगे निकल गया, आप वहीं फंस गए. आप आज तक उसी चीज़ की मॉडर्न वर्जन्स बना रहे हैं. इट्स बीन डेकेड्स नाउ. सो आपने अपने राइटर्स को भी, क्योंकि समहाउ उसमें वो मिर्च मसाला था, वो जल्दी बिक गया. यार मसाले वाली चाट ज़्यादा बिकती है, कम मसाले वाली चाट हमेशा कम बिकती है. तो आपने मसाले वाली चाट की आदत डाल दी. तो वो जो कमर्शलाइजेशन का भी एक तूफान था, उसका भी, बिजनेस का भी एक पूरा एंगल है जिसने इन चीज़ों को मुतासिर किया. और उसके बाद जब वो चीज़ें डिज़ाइन हुई, बहुत सी चीज़ें ये भी थी कि आपने, बिकॉज स्टेट की तरफ से हमेशा ऐसे कंटेंट को ही प्रमोट किया गया जिसके अंदर बस लोग बिजी रहें, करते रहें, सब ठीक है, ये अल्लाह ताला जो करता है ठीक करता है, ताकि आपको जो चूरन भेजा जा रहा है आप खा लें, कि अल्लाह ताला कर रहा है, ठीक कर रहा होगा, तो कोई बात नहीं करे. तो उन चीज़ों को दबाया जाता रहा. तो वो फिर एक कल्चर बन गया, वो दबाना, वो बात ना करना, वो बस रग के नीचे डाल देना और एक टिपिकल सी एक स्टोरी के ऊपर बात करते रहना, वो कल्चर बन गया. और फिर आपके साथ साथ वो मसाइल चल रहे थे कि आप एक तरफ जो हमारे कॉलोनियल मसाइल हैं वो सेपरेट हैं, इंग्लिश मीडियम वो चीज़ें सेपरेट हैं. तो आपके जो ज़्यादा एजुकेटेड बच्चे थे वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में चले गए, उर्दू लिटरेचर वैसे ही ख़त्म हो रहा था, पढ़ने के लिए भी नहीं रह गया. मैंने अपने बचपन में 80s 90s आई रेड अ लॉट ऑफ उर्दू लिटरेचर. अपना ये आपके शफीकुर रहमान से लेके कर्नल मोहम्मद ख़ान और अपना पतरस बुखारी, जितने उस ज़माने के राइटर्स थे, वो वाले राइटर्स नॉवलिस्ट रहे ही नहीं. बाद में एक दो रह गए, बाकी तो आपकी, जब मेरे बच्चे पैदा हुए हैं, आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू फाइंड गुड उर्दू नॉवेल्स. पुराने मिल जाते हैं, वो उनको इतने मज़े के नहीं लगते. 80s और उसके हैं, तो उसमें वो जाहिर है वो अपना टाइम डिपिक्ट होता नज़र नहीं आता. न्यू फिक्शन राइटर्स आपको अच्छे मिलते ही नहीं है. जो मिलते हैं उनकी 4 पेज में पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये क्या है, ये तो उर्दू ही गलत है, ये क्या किताब दूंगा इनको, ठीक है. तो वो सारी चीज़ें शामिल होती गई.
So yes, those people are missing. Bigger question is why they're missing, and if we want to bring them back, so that is the kind of space जो भी आप बात कर रहे थे कि जनरेशन एक्स को इनको मिलाया जाए. I think it's very much needed सही. that शायद उनमें से 4 लोग इंस्पायर हों. और मैं सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, मैं तो अभी थॉट की बात कर रहा हूँ. लैंग्वेज तो बाद में देख लेंगे, थॉट तो आना शुरू हो. सही. सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू वी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग देम. आज शुरू करेंगे तो 10 साल बाद आपको नूर मकसूद मिलेगा या 15 साल बाद मिलेगा. आज तो मिलना मुश्किल है. नायाब हो गया है. बट यू नो व्हाट इज़ रियली एक्साइटिंग कि आपने जब ये बात की ना कि ज़हीरुद्दीन भी फिल्म लिख रहे हैं, या उन्होंने फीचर किया, आप भी लिख रहे हैं. ज़हीर भाई इज़ एन अमेजिंग फिल्म मेकर. वो कमर्शियल काम तो करते हैं, बट आई थिंक ही इज़ वन ऑफ दोज not just brilliant and very capable person, but he's very witty. He is. As a person and as a leader or as a writer as well. So I think that's really exciting. That's coming up. We have a common friend, Jeff is also is producing a feature. अच्छा, ये मुझे नहीं पता है. Jeff, sorry Jeff, sorry Jeff if I sort of gave the news earlier, but there's something coming up. We should definitely follow. It's for kids. बल्कि वो बता के गए हैं इस पॉडकास्ट के ऊपर. Okay, I think then I might know about it. उसने कुछ गानों वगैरह की बात की थी एक ज़माने में मुझसे. Jeff is a great person, I think, and he's always up to something new. He's also so he's good. He's doing something. हाँ, उन्होंने एनिमेशन की है, फीचर लेंथ की एनिमेशन की है. Great. That's coming up. That's his field. Yeah. From my generation, I remember Hisham bin Munawwar. उसने भी रिसेंटली एक फिल्म की थी. Met him, yeah. शाम बोल में था शायद. ये बोल का पार्ट था, right? I was the editor of Bowls. I've met him. Good guy. I think Hisham, and I'm really proud of him. The way one of those young filmmakers जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये तो उनमें से ही है, उन boys में से ही है. Yes, he's amazing. I think वो of course वो काम के साथ और निखारता जाएगा. Polish हो जाएगा. But जाएंगे. thinking wise, I think he's fabulous. He's सही जगह पे खड़ा. Very connected. Then maybe you would also agree, Adil Afzal. जो आतिफ असलम वाले ड्रामे में भी है, और अदील जो एक मौसीकी वाली सीरीज भी करता है, वीडियो सीरीज करते हैं. मुझे नाम से ज़हन में नहीं आ रहा. हो सकता है. I'll show his work to you later. I think he's again really doing amazing work. वो उर्दू में भी काम कर रहा है, लिखता भी है, एक्टिंग भी कर रहा है. सही है. आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा वो कौन है. I think we should have that platform where we can all these kind of people can meet, नए ideas discuss हो जाए कुछ. बस ठीक है. I think ये शुरू हो चुका है. हम नेक्स्ट में इसको और आगे लेके जाते हैं. अच्छा, वो जो AI की आप बात कर रहे थे, आप एक्सप्लोर कर रहे थे कि वो क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे चीज़ें हो रही हैं, वो इंटरेस्ट आप में कहाँ से आया? एक तो इस लिहाज से कि मेरी अपनी फील्ड में शुरू से कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा रहा, एडिटिंग की साइड से. आई स्टार्टेड एज एन एडिटर बेसिकली. सो उसकी वजह से देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क, डिज़ाइनिंग भी है, कंपोजिटिंग. आई वेंट इनटू एनिमेशन आल्सो एज ए डायरेक्टर भी, बट कंपोजिटिंग वगैरह खुद भी करता था. So it was kind of my interest, and especially AI always fascinated me because I think the kind of possibilities it has, also the kind of dangers it probably has in it. तो उसका interest बहुत ज़्यादा था. And I as being a writer, अभी जो मैं आपसे बाहर भी बात कर रहा था, I think in any time of the world, you've always seen artists as in the forefront of looking into the future, because it's always a combination of an artist and a mechanic or a scientist. Artists come up with ideas, and then scientists come up with if they're possible to actually make them happen. So as being that artist who wants to create, there's so many things. It started with a lot of scripts that I had in my mind. So, and then I was thinking that maybe it's actually possible. It's not that impossible. So, I started looking into things. I started watching such movies. And उसके बाद कुछ दोस्त हैं जो बाहर काम करते हैं. They're into animation. Some of their friends are into artificial intelligence. So फिर वो बात से interest भी बढ़ता गया, So there's a lot of interest that I feel I would like to explore that side. ठीक है. यानी कि अभी आपने AI के tools try नहीं किए अपनी production में? Not in production as such, नहीं. Tech बहुत आगे है इस फील्ड में, not exactly AI, but for example जो introduction है ज़्यादा creative process में. For example the chat GPT thing जिस पे लोग बात करते रहते हैं, I think it's an incredible tool. इसके अंदर insecurities भी बहुत हैं आर्टिस्ट में इसके आने के बाद. बाहर तो बाकायदा मुजाहरे हो रहे हैं.
understand it as a tool. It's part of evolution also, because अब जो evolution है, I think life की, rather than more physically, it's getting into more on the intellectual level, and I think that is where the evolution will be leading us into the new जो भी हमारी दुनिया आगे बनेगी. It's mostly work towards intellectual evolution. ठीक है. So I think the AI thing is part of it. So उसके शुरू में, क्योंकि जब कोई भी टूल या कोई चीज़ आती है, उसकी एक बहुत fascination होती है. It's very difficult for human beings to come out of their comfort zone and accept a change, because it poses a lot of new challenges. So I think that is where जब ChatGPT को आप पढ़ते हैं, so in the beginning when शुरू में ये account वगैरह बनाया भी, so I actually tried as like, अच्छा देखते हैं अब किस लेवल पे जा रही है चीज़. I gave few scenes to ChatGPT, one of my films. अच्छा, मैंने ट्रांजिशन भी देखा, because it been happening for last maybe a year or so. बिल्कुल जो बिगिनिंग का फेज था चैट जीपीटी का, इट स्टार्टेड कमिंग विद वेरी बेसिक काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स. मैंने बिंग के ऊपर भी अकाउंट बना लिया, वो भी एक चल रहा था. अब तो बहुत सारे ऐसे आ गए हैं एआई के टूल्स, and some of them started coming up with some brilliant ideas. And even though when they say कि जी ये तो जो मौजूद है डेटा सिर्फ उसमें से निकलता है, बट फिल्म के बारे में भी ये कहते हैं कि यार टोटल 30-35 कहानियाँ ही होती हैं, उन्हीं को हाउ यू टेल देम it makes them something new. And ChatGPT is doing exactly the same. The only thing is its response time is in seconds, whether your response time is in days or weeks sometimes. So even if not a complete script, if you're stuck on a writer's block and you include that AI tool into your process, it really helps. It sometimes give you, if not directly just likha hua hai, but it'll give you some idea which is like, oh yeah, I did not thought it that way, and suddenly the break, that blockade is gone. So so I think all these tools are very, very fascinating, and that is where I started thinking, if the AI systems coming into the world right now are this capable, so what else can be done with them? No, I think definitely. For example, if I could remember, जब हम आर्ट स्कूल में ट्रेनिंग ले रहे थे, so we used to do sketches. किसी भी चीज़ की स्टडी के लिए before we could get to work on the actual artwork, तो हम sketches किया करते थे. तो अब now this I think could also be a sketch. अगर आप अगर ChatGPT को use कर रहे हैं, it doesn't have to be a final thing, but if you could process your ideas, if you could develop like 20, 30, 40, 50 ideas just like that. So and then maybe then you pick and choose, अच्छा यार ये इस वाले में strength है, let's refine it, let's bring it out from ChatGPT, and then I can work on it and I can refine it. Either it's a writing exercise, either it's design, either it's technology, whatever. Business finance है ना. So वो शायद वो possibilities, मतलब अगर आपको पता है कि कैसे expand करके फिर उसको utilize करना है, तो definitely वो मेरे ख्याल से useful हो सकता है. बट टेल मी वन थिंग, आपने जब ये बात की ना कि इस तरह की ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं और कुछ लोग जो हैं थोड़े से परेशान हैं, थोड़ा सा हमने इस पर पहले भी कुछ गेस्ट के साथ बात की थी. अब मुझे ये लग रहा है, मैं ये सोचता हूँ अरमगान के शायद चेंज जो है वो टफ़ होता है हर इंसान के ऊपर. ट्रू. कम्युनिटीज़ के ऊपर भी टफ़ होता है, और वो जैसे अगर कोई फ़िक्रमंद है या कोई थ्रेटन है या कोई परेशान है, तो ऑफ कोर्स उसके रीजंस भी होते हैं. बट हाउ कैन वी tell people at large कि hey, we've entered the digital era now. Everything, all these industries would be digitized. जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज अभी इस वक्त आगे हैं डिजिटाइजेशन के अंदर. ट्रैवल टेक, फिन टेक, ये काफ़ी आगे हैं. लेकिन एग्री टेक वुड फॉलो अप, टेक्सटाइल वुड फॉलो अप, फैशन वुड, बिकॉज वो देखें ना, जैसे वही जो स्टेजेस वाइज चीज़ चल रही है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1, 2, 3 whatever. But now you're into digital age. Yeah. There is no going back. True. है ना. So how do we sort of make it easier for people कि अच्छा, this is where you're living now, this is 21st century, the first quarter of 21st century, you don't need to sort of worry about your old ways of doing things, because there are new ways of going about your exact work as well. Yeah, I think you're right, but it's very difficult to tell this same thing on a large scale. Of course, the only thing you can do, there are two things I would like to say. One is the reason behind it. I think why we are always afraid of change. Humans are like pockets of habits. That is how we operate. When you drive a car,
Look, I've been driving my car for like say 25 years. अब जब मैं reverse करता हूँ घर से बाहर, I can't even talk to on the phone, talk to someone looking somewhere else. I'll still मैं reverse करूँगा, निकाल के ले जाऊँगा. You know, I won't even think about it. जब मैं पहली दफा कर रहा था, so I would need to say ये लग ना जाए, शीशा कितना दूर है, पीछे को खड़ा होकर आवाज दे रहा है, you know. So what our brains are designed that way for evolution to live for a longer period. We are designed to make habit out of everything. So once a habit is made, now we don't need to worry about it. You know, it's easier, it's done. So whenever you go to a new territory, you know, आपका वो प्रोसेस, वो हैबिट टूट जाती है. यू नो, इसी तरह घर से जाते हुए मेरे घर के बाहर एक रोड थी. एक दिन मैं इसी तरह कोई किसी से बात करता हुआ जा रहा था, एंड सडनली वी हैड अ ह्यूज जंप. वो पता चला कोई नया स्पीड ब्रेकर बन गया. यू नो, या सो उसके बाद से कई दिन तक वो ड्राइव वहाँ पे इजी नहीं थी, बिकॉज आई यूज्ड टू वेट फॉर कहाँ है यार, वो याद नहीं है ना, अभी हैबिट नहीं बनी. और फिर वो हैबिट बन गया, फिर वो नेचुरल हो गया. यू नो, सो anything that breaks our habit, we become uncomfortable. Biologically, we're designed to be uncomfortable because we can't form a habit. And what is the problem with the new world is the पिछले 6 से 8 सालों में, the amount, the speed, the pace with which human civilization is moving forward, tech wise मैं बात कर रहा हूँ. So that we don't have even enough time to create a habit. We are using a tool, we are trying to get used to it, and suddenly by the time we are developing a habit, there's a new tool. So, you know, so you have to move on and go to that. And the moment you're trying to adjust to it, there's something new. You know, so we don't have that relaxing time. So I think जो आप बात करते हैं stress के बढ़ जाने की भी और इन चीज़ों के, that adds on. एक तो वैसे ही आपको habit से change करने की बात हो रही है, और फिर कोई भी नई चीज़ पे आपको stay करने का time नहीं मिल रहा. So it's quick. Yes, so you have to keep it. So your brain function, your entire bodily function is always on. Your brain doesn't have time to sleep, in fact, you know. So that affects your attitude towards and eventually you starts hating things. It's like, what is this happening in my life? What is this madness? So because we can't adjust to this new way of evolutionary development on the intellectual side and on the tech side, that we can't handle so much, because इससे पहले सदियों से हम लोग ये करते आ रहे थे. Now things are changing within months, you know, within weeks. So we're not used to it. So it's gonna take some time. So एक ये चीज़ है मेरे ख्याल में जिसकी वजह से हम uncomfortable होते हैं. Secondly is चेंज तो इनएविटेबल है, चेंज ने तो आना है. एंड आई थिंक एज अ पेंटर, जो मेरा एक आप समझ ले बैकग्राउंड, जो मेरी एजुकेशन इज, इट वाज इन पेंटिंग. आई मेजर्ड इन पेंटिंग. व्हाट आई लर्नड इज, there was a time before my thesis when I was doing some paintings जो बहुत lines में थी. I used to have a lot of ballpoints or brushes, different kind of things in my hand, and I used to paint lines and stuff like that. Good work, I liked it, but मुझे समझ नहीं आती थी मैं जा कहाँ रहा हूँ, you know. And I met Anwar Saeed. He used to be the head of design department, I think, at that time. Amazing guy, and I think he helped me a lot. So I went to him and I asked him, this is my work and मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ, and he comes up with such a great insight. I think that changed my entire thinking, and I think helped me to devise a lot of stuff in my future at that time. He said, right now you're in a phase of fascination. So he said, first tell me how you paint it. करके दिखाओ मुझे, क्या करते हो, तुम्हारा प्रोसीजर क्या है. सो ऐसे मैं बॉल पॉइंट पकड़ता हूँ एंड आई यू नो ड्रॉ अ स्ट्रोक. तो इससे पहले तुम स्केच करते रहे हो, डिज़ाइन करते रहे हो. तो सर यू मूविंग योर एंटायर आर्म, योर एंटायर बॉडी. सो यू नो, तो अभी जो तुम्हें मज़ा आ रहा है ना इस पेंटिंग में, फॉरगेट अबाउट द मैसेज. You don't know what you're making because you're not making anything. You know, you're basically into a fascination of that new tool, which is your body. You're exploring something new. तुम हाथ से निकल के अपने पूरे जिस्म को इस्तेमाल कर रहे हो, ये इसकी fascination है. So don't be afraid of it. Just be aware and keep doing it. It will lead to something new. You know, thought आ जाएगी. And that helped me a great deal. And when I looked back at all those my paintings at that time, which were all about lines and circles and, you know, illusions and perspectives, and I could see the fascination, the joy of it, that actually what I was doing is like I was actually just enjoying it, you know. Process I was just trying too hard to figure out what am I doing, you know, क्या बना रहा हूँ मैं. तो it's like उसके बारे में भी फिक्र नहीं करो. So that is why I think I also understand now that in every process that you make, whether it's tech, whether it's writing a book, whether it's music, whether it's a business, there's a time which has a fascination to it. And that fascination takes its own time,
और उस फैसिनेशन के बाद जाती है बात डीपर होने की तरफ. तो अभी जब हम AI को देखते हैं, आई थिंक राइट नाउ द वर्ल्ड इज इन द फेज ऑफ फैसिनेशन. सो फैसिनेशन में होता ये, यू ट्राई एवरीथिंग, यू ट्राई एवरी पॉसिबल सिनेरियो. जब मैं शुरू में एडिट में आया एंड आई लव्ड एडिटिंग, कि आप मज़े का जादू हाथ में आ गया. और इन आफ्टर 99 वी वर इंट्रोड्यूस्ड विद नॉन लीनियर एडिटिंग व्हिच वाज अमेजिंग. इट्स लाइक यू कैन डू एनीथिंग, कलर चेंज कर दो, फिल्टर्स लगा दो, आगे पीछे कर दो एडिट. एंड द काइंड ऑफ एडिट्स आई क्रिएटेड एट दैट टाइम, मैं कभी उनको देखता हूँ दोबारा तो मैं हंसता भी हूँ, बिकॉज उसमें हर तरह की चीज़ ट्राई कर दी ना. एक फिल्म बनाई, उसमें सारे फिल्टर लगा दिए, कोई रेड हुआ हुआ है, कोई ग्रीन हुआ हुआ है, कहीं कलर्स के साथ कुछ और खेला हुआ है, ब्लैक एंड वाइट कर दिया, क्रेजी एडिट्स जोड़ के देखी हुई हैं. That time helped you develop all the skills that I have today. But इसी तरह AI का जो अभी जो tech का time, rather I would say not only AI, the entire tech industry is in a phase of a fascination. So we are trying so many things and it makes a lot of people uncomfortable also. एक तो वही habit वाली जो मैं बात कर रहा था. Secondly, we don't know where we're heading to. We don't know where we're going. So बजाय उसके कि आप उसको ज़बरदस्ती कुछ करने की कोशिश करें या उसको बंद करने की कोशिश करें, try to understand that there's no point right now, like relax and keep playing. This is that fascination. You go through that phase and then the most important thing will happen, जो भी मैं बात कर रहा था आगे के लिए, for which I think platforms like Ijad Labs are good in Pakistan, कि इस तरह की कुछ चीज़ें शुरू हो जहाँ people can sit together and discuss things, ideas. I love TED Talks, for example, because it gives you that space where people can come sit with all those things that we're doing right now, and then we generally realize that what is happening, and then a thought will be formed later on. So I think वो जो fascination का period है, it is meant to be chaotic. It is meant to be chaotic. It will be chaotic for some time. The most important phase after that is जब आप उस painting में उस चीज़ से joy से आपका दिल भर जाता है, आपने सारे शौक पूरे कर लिए हैं, अब आप now you start thinking why I'm doing it. Okay. And that is one of the most important questions. And when you come to that is where ideas come. That is where you be specific. And that is where फिर आप नई चीज़ किसी गोल को लेके चलते हैं. You take up a dream and you go towards it. So now this will start happening, and it will take some time for the world to absorb it. And I think we should, and you should look forward for some more chaos there. And I think chaos is good for something new to come. So maybe having an oversight during this process helps. It does. Someone who is right beside you or looking over your shoulder and says about your process कि नहीं ये चीज़ ऐसे है या वैसे, again like a guide, or someone who has some sort of I think बहुत अच्छी बात पकड़ी तुमने, because and that is why platforms like these are important, because that is what they give you. Whenever there's a platform like this, so you will have the similar kind of what NCA did to me at that time. It's never a college, वो कभी एक space नहीं होती physical. आप कहते हैं जी इस college चला जाता हूँ मैं ज़बरदस्त हो जाऊँगा. At that given time, NC had great atmosphere. The kind of faculty we had in the late 90s, the kind of environment was there, the kind of things students were doing. वो जो atmosphere create होता है ना एक जगह पे, एक space में, so there's that space which has that certain progressive environment that polishes you, that guides you, and that is where we lack. So these kind of platforms, I agree, because you need that kind of mentors, and that is the kind of space you need. Some kind of space, a gathering of similar thinking people, from where you can find student कौन है, teacher कौन है, खुद ही बन जाता है. सारे students होते हैं और सारे teachers होते हैं. But yes, this is the way we should go forward. बिकॉज जब आप वो बता रहे थे ना कि आपने इस तरीके से आप अपनी पेंटिंग किया करते थे, इस स्केल से आप दूसरे स्केल के ऊपर गए, देन आई वाज थिंकिंग मे बी यही जो हम बात कर रहे हैं कि सम पीपल हु वर सॉर्ट ऑफ हेजिटेंट और सॉर्ट ऑफ कंसर्न कि एआई और टेक्नोलॉजी किस तरीके से उनके काम को चेंज इवॉल्व कर रही है. सो मे बी वही, अगर उनके पास भी एक कम्युनिटी होगी, इफ़ दे आर पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी विच इज़ गोइंग थ्रू सिमिलर sort of experience, or if they have sort of a guide like Anwar Saeed or a mentor,
walking them through कि अच्छा ये चीज़ है, this is how to manage the change. Yeah, exactly. Because he, as an experienced person, he exactly knew कि कि what कहाँ पे खड़े हैं आप? कहाँ पे खड़े हैं और किस चीज़ की बात करनी है. Yeah, true, very true. He told you about कि अच्छा तुम्हारी muscle memory build होगी, now it's fashionist या तुम जो भी चीज़ें कर रहे हो, and then he also knew कि the actual work would come later. Yeah, exactly. So उसके लिए डरने की जरूरत नहीं उसमें है, डरने की आएगा. जरूरत नहीं है. अभी लगे रहो अभी. ये skill develop करो, ये capability develop करो, explore it and keep moving forward. So I think maybe शायद वो उनकी जो hesitation है, जो हम जब change की बात कर रहे हैं, change as a challenge, वो शायद थोड़ा सा कम तब भी हो सकता है कि I agree. That's a good point. environment, That we need such people to be there, especially for the people who are, because at that time whenever you go towards a change, there always will be confusion. There always will be fear because it's an unknown territory, and sometimes it feels like it's not good for you. You may fall. So बहुत से डर जो लगते हैं, तो हाँ, ऐसे एक्सपीरियंस लोग आपको बता सकते हैं कि नहीं असल में आपको लग क्या रहा है और आप खड़े कहाँ हैं और आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या हैं. सो आई एग्री, यस, you need such mentors. Could be a good thing. Perfect. Thank you so much for coming in today. No, thank you for having me here. ऐसे मुझे मजा आया बात करके. Thank you so much. बहुत मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहा, और जो मेरे भी कुछ फैमिली के मसाइल थे वो बच्चों वाले I got to ask a specialist कि वो क्या है, किस तरह की चीज़ है. And I look forward to meeting you again. Same here, man. Thank you so much. खुदा हाफिज़.